Good morning and warm welcome to all the participants or panelists and the entire TSPL team. Thank you all for joining today's very informative session, part of an exclusive Business Connect webinars, BizNxt. BizNxt, the webinar series on growth for MSMEs, technology and beyond. Today we will be covering topics to ensure seamless business operations. We'll be addressing some major pain points and assisting you in your quest for a simplified business journey. With this, I would like to introduce our first speaker of the day, Shashank Gupta. Mr. Gupta is fellow chartered accountants and qualified lawyers. He's pursued post-graduation diploma in tax law under the aegis of Supreme Court of India from the Indian Law Institute as a batch topper and is pursuing PhD. He has worked with Deloitte and in BMR as well and is presently practicing as the head of indirect tax practices at Mark Tax Advisors, an international consultancy firm. He has worked extensively on international VAT indirect tax regime too, and have also conducted workshop for advising businesses on GCC VAT, which was implemented in Gulf countries. He is also the co-chairman, National GST Council of India Industries Association, a member of the GST and Indirect Taxes Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, member of the GST Core Advisory Group of the Institute of Company Secretaries of India, member of the GST and Indirect Taxes Committee of ASSOCHAM, and has been a member of the Haryana State Budget Advisory Committee in financial year 1819. He is a renowned tax professional in the field of GST and indirect taxes in India and have conducted more than 300 seminars and sessions for trade and industry pan-India on goods and service tax as well as as other indirect taxes. He was also awarded the Law Minister of India in 2016 in the August presence of the Chief Justice of India and 4 other Supreme Court judges. He has got more than 10 years of experience exclusively into the Indian taxation regime and have also been awarded as Indirect Tax Practice Leader year 2021. So let's now hear from the subject matter expert himself. Over to you, Shashankji. Thank you, Rakesh ji, for the kind introduction. At the outset, my thanks to Tally, MSME and Startups Forum Bharat, and also BizNxt for this opportunity. And a very good morning to all the participants in the audience. Friends, we are here to discuss and understand the nuances of E Invoicing under GST. For E Invoicing, we've also prepared a slide deck, which I'll share. So, E Invoicing, before we go on to discuss E Invoicing, let us first understand what is the concept behind E Invoicing. Why was there at all a requirement of E Invoicing, and is E Invoicing a novel concept in India? Friends, the requirement of E-invoicing, first of all, E-invoicing is no longer a novel concept in India. E-invoicing is already applicable in India since approximately 2 years. It was introduced initially for entities with turnover more than 500 crores, and now gradually pulling down the turnover threshold. The limit has come down to 20 crores. So as we all know, that a recent amendment has been made in the law, wherein it has been mentioned that businesses with aggregate turnover more than INR 20 crores would also be required to generate e-invoices. So this means that, and what does it mean, that INR 20 crore in 21, 22, or any year before that, or when is this 20 crores to be looked at? So here the law has clearly specified that the aggregate turnover, which is more than INR 20 crores for any financial year, right from 17, 18 onwards. So even those cases where there is a business, a taxpayer, whose turnover was 21 crores in 1819,
but then his turnover has constantly been 15 crores, 16 crores, 12 crores, even that business would be covered under the net of generating an e-invoice. And when is this change going to be effective from? The change is effective from the ensuing financial year, that is April 1, 2022 onwards. And this change was notified by notification number 1, 2022, Central Tax under GST dated February 24, 2022. Next is the requirement of e-invoicing on every business? And interestingly, under GST, even government and government departments and local authorities have been covered under the net of registered persons who are liable to pay tax. So basically, they have been implicated and made liable to pay the tax under GST. So would this mean that even the government departments, even they would need to raise an e-invoice if their annual turnover as per GST is more than INR 20 crores? Well, friends, there are certain exclusions from the domain of e-invoicing under GST. And the exclusions are, number 1, the government department, the local authority, special economic zone units, that is any unit operating within an SEZ, banks, NBFC, financial institutions, goods transportation agency, supplier of passenger transportation service, and lastly, cinema hall. If there is a taxpayer who gets covered under either of these 9 categories, then even if your turnover is more than INR 20 crores or has been more than INR 20 crores, in any of the past preceding financial years, right from 17-18 onwards, if you are covered under this list, you are not required to generate a e-invoice. I see certain people are raising hands. I would request them to lower their hands for the time being. We will take up queries towards the end of the session, so please be patient, because what I understand is that as we go through the course of this presentation, most of your queries will get addressed. Whatever is left, if any, we will take it up towards the end of the session. Now, does this requirement of e-invoicing come into picture? The requirement of e-invoicing comes into picture from Rule 48, Sub-Rule 4 of CGST Rules 2017. These rules prescribe that notified class of registered persons. What does this mean? We just read that e-invoicing is applicable on businesses with aggregate turnover more than INR 20 crores. So that is where it says notified class of registered persons to prepare invoice by uploading specified particulars in form GST INV 01, meaning that GST INV 01 is basically the form wherein details will have to be populated by you, and basis the details populated, you will get a e-invoice, generated e-invoice from the invoice registration portal. What is this invoice registration portal? Just like for GST compliances, there is a separate portal. Just like for notification circulars, there is a separate portal, CBIC. Similarly, for generation of e-invoices, there is a separate portal by the name of E Invoice, and you can go and click onto that portal and undertake this entire procedure. Now, what does an e-invoice mean?
Does an e-invoice mean that you will no longer raise an invoice in your books of accounts? अब इनवॉइस आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट ही रेस करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कुछ बनेगा, आपके पास आएगा और उसको लेकर आप आगे अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स करेंगे। आपको अब इनवॉइसेस नहीं बनाने होंगे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड that you will continue to create the GST invoices basis your own accounting billing ERP systems. जो भी सिस्टम आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है उसके बेसिस पर आप अपना इनवॉइस जनरेट करते रहेंगे। E-invoicing is just uploading the invoice data on the government's portal on real-time basis and receiving an acknowledgement for that. जो इनवॉइस आप बनाएंगे उस इनवॉइस को, डिटेल्स को आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में एक फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। Once the details are reported, the invoice registration portal or IRP in short will return signed the invoice with a unique invoice reference number. तो इसे आप, अगर मैं इसको सिंपल प्लेन वैनिला लैंग्वेज में आपको बोलूं तो जैसे आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एक यूनिक होता है जीएसटी में कि आप अपना पैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उससे आपका एक जीएसटी आईएन बन के आता है। सिमिलरली आप के हर इनवॉइस का, आप इसे मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये कहीं पे लॉ से नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज फ्रॉम अ सिंपल लेमैन लैंग्वेज कि हर इनवॉइस का एक रजिस्ट्रेशन होगा एक सेपरेट ई इनवॉइस पोर्टल पे, और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए, तो हर इनवॉइस का एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा along with a QR code. So invoice reference number becomes clear to you. It will be a unique number, unique to every invoice, and this will be allocated for that invoice along with a QR code. What is this QR code? See, we all know the world is rapidly progressing. We are going towards more and more digital systems, more and more सिंप्लीफाइड लाइफ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आज आप कुछ भी छोटा सामान खरीदने जाते हैं, यू गो टू अ वेजिटेबल वेंडर, यू गो टू अ स्ट्रीट शॉप वेंडर, और वो भी अपने बाहर एक क्यूआर कोड लगा के रखते हैं, और आपको अगर उनको 10 रुपए भी पे करने हैं, 20 रुपए भी पे करने हैं, तो आप उसको स्कैन करते हो और उसको पेमेंट पेटीएम, फोन पे या जो भी आपके चैनल्स हैं उसके थ्रू पे कर देते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी इनवॉइस के बेसिस पर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और मेरे ऑफिसर को चेक करना है, उसने गाड़ी रोक ली, चेक कर रहा है और उसे चेक करना है कि क्या इनवॉइस में डिटेल्स सही भरे हुए हैं, इनवॉइस में क्या रिपोर्टिंग की गई है, मुझे क्या बताया गया था कि इस इनवॉइस के कवर में क्या भेजा जा रहा है, कितनी वैल्यू का भेजा जा रहा है, कितना टैक्स पे किया जा रहा है। तो ऑफिसर्स के हाथ में एक मशीन दी गई जो इस क्यूआर कोड को रीड कर लेगी, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और इमीडिएटली उनके सामने डेटा पॉपुलेट होकर आ जाएगा कि जब आपने ये इनवॉइस बनाया था तो आपने गवर्नमेंट को क्या बताया था कि आप क्या भेज रहे हैं, और जब वो डेटा उनके पास आ जाएगा उससे वो क्रॉस चेक कर लेंगे और आपकी ट्रांजैक्शन अगर ठीक है, जो आपने बताया था वही आप कर रहे हैं, तो इट विल बी अ सीमलेस transaction. So two things we've discussed about. There is one invoice reference number and QR code, and a GST invoice will be valid only with a valid invoice reference number. So if you're required to generate an e-invoice, you should have a valid invoice reference number for all those invoices which are covered, and you should also have a QR code. Once you mention the QR code, once you affix that QR code on that, once that is there on the invoice, then it is not necessary to mention the IRN number separately, because the QR code in itself contains certain details which includes the invoice reference number.
Now, how does an invoice reference number look like? तो आपका एक जीएसटी नंबर जैसे होता है, तो उसमें पैन नंबर होता है, फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, देन असेसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है. इसी तरह से इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज अ यूनिक 64 कैरेक्टर हैश स्ट्रिंग. Why 64 characters? Because you can only imagine how many invoices would be being raised every day. And every invoice should have a unique reference number. So that is why the character strength or the numbers have been kept as 64 characters. And example के तौर पे मैंने एक आपको यहाँ पर mention भी कर दिया है कि किस तरह से इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिखेगा. जो बात हमने पहले भी कही मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट इनवॉइस रेफरेंस नंबर need not be printed on E invoice. It is not required to be printed on the invoice, provided there is already an embedded QR code. Supplier will send the invoice to the receiver in the same way as he is doing now. While there is a relaxation which has been given in the law. So what does the law say usually with respect to invoices? The law says, if you are a supplier of goods, generate 3 copies of invoice. Original for the buyer, duplicate for the transporter, and triplicate should be a copy that you should read. If you are a service provider, raise 2 copies of invoice, original for the service recipient and duplicate for the supplier's records. But in case of e-invoice, the law clearly says that in case of goods, triplicate copies are not required to be generated, and in case of service, duplicate copies are also not required to be generated. So is this the only relaxation? Is this the only relaxation? No. Further, once you are recovered under e-invoice, giving real-time e-invoicing data to the portal will automatically bounce off that data to your GSTR1 return. तो आप invoice की details जैसे जैसे invoice generate कर रहे हैं, वैसे वैसे ही automatically आपकी GSTR1 भी simultaneously prepare होती जा रही है. So e-invoicing specifically covers B2B invoices, यानी कि business to business invoices. आपने अपने बिजनेस से किसी और रजिस्टर्ड बिजनेस को गुड सप्लाई किए, आपने ई इनवॉइस में कवर्ड थे, आपने इनवॉइस जनरेट किया, जैसे ही इनवॉइस जनरेट किया ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर1 में वो डिटेल पॉपुलेट हो जाएगी, 2A में आ जाएगी. 2A इज नॉट नो लॉन्गर रेलेवेंट क्योंकि डायनामिक थी. 2B विच इज स्टैटिक ऑटोमेटिकली परचेजर को 2B में दिखने भी लगेगा. तो आपका ये काम भी आसान हो. Secondly, with respect to e-way bills, part A of the e-way bill will also get automatically generated. कि आपके e-way bill में जो part A है वो details भी आ जाएंगे, and even if you can go on to give the details of part B, which is generally the vehicle related details, the transportation vehicle related details, if you can give that also, the entire e-way will also be simultaneously generated. So these are the simultaneous compliance relaxations which you will be entitled to once you start following the invoicing procedure. Now, what is the purpose of e-invoice? Is the sole purpose of invoice is to ease the compliances for you, or to enhance the compliance burden on you?
Why is this concept of e-invoice there? Why was, and is India the first country to implement the concept of e-invoicing? Friends, India is certainly not the first country to implement the concept of e-invoicing. जैसे जीएसटी को हमने बाहर कंट्रीज से कॉपी किया है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने पहले इसको बेसिकली दिस इज वैट सिस्टम ओनली, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट्स द कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है, बट लेट अस नॉट गो इनटू दैट. जीएसटी वाज ऑलरेडी एप्लीकेबल इन सर्टेन कंट्रीज. जैसे आज हम जीएसटी में फ्रॉड्स देख रहे हैं, जो हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते ही हैं कि इतने फेक इनवॉइसेस बना दिए, इतनी फेक सप्लाईज कर दी, और उसके बेस पर क्रेडिट ले लिया गया, और अब डिपार्टमेंट उनको पकड़ रहा है, ढूंढ रहा है. तो ये प्रॉब्लम्स पहले ही वो डेवलप्ड इकोनॉमीज फेस कर चुकी हैं, एंड देन दे डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म टू डील विद ऑल दीज चैलेंजेस, कि कैसे हम अभी हम जो कंप्लायंस करते हैं वो पूरे मंथ हम पहले अपनी सेल्स कर लेते हैं, मंथ एंड पे फिर हम जाते हैं और पोर्टल पर रिपोर्ट करते हैं, इस महीने हमने इतनी सेल करी, इतना टैक्स कलेक्ट किया, इतना टैक्स हम डिपॉजिट करा रहे हैं. बट गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मुझे सिस्टम को मजबूत रखना है तो कहीं ना कहीं रियल टाइम बेसिस पे करना पड़ेगा ना इसको. तो इसीलिए उन्होंने 500 करोड़ से शुरू किया, पहले फॉरेन के कॉन्सेप्ट को बोरो किया, 500 करोड़ बड़ी कंपनीज पे लगाया, और करते 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 अब एमएसएमई सेक्टर में भी जो 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले हैं उन पर भी एप्लीकेबल होने जा रहा है. So what are the benefits, the actual benefits which will arise to it, and why was it brought in the concept of e-invoicing? Tax authorities will have access to transactions as they take place in real time, since the e-invoice will have to be compulsorily generated through the GST portal. ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट मंथ एंड तक वेट कर रही है कि हाँ मेरे को आप मंथ एंड में बताएंगे कि आपने कितनी सेल्स कर दी, कितने इनवॉइसेस रेज किए, और फिर उसके बाद हम लोग जाके आपको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या इश्यूज रह गए या क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई. बट नाउ वंस ई इनवॉइसिंग यू गेट कवर्ड बाय ई इनवॉइसिंग, गवर्नमेंट के पास डेली डायनामिक डेटा होगा कि आपने आज कितनी B2B सप्लाईज के ई इनवॉइसेस जनरेट किए. अच्छा, अब आप कहेंगे कि B2B में क्यों? क्योंकि B2B ही तो वो ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर आप क्रेडिट पास ऑन करते हैं, और फेक क्रेडिट क्लेम्स को ही तो गवर्नमेंट प्लग करना चाहती है. There will be less scope for manipulation of the invoices, since the invoice gets generated prior to carrying out a transaction. किसी केस में, मान लीजिए, मैं नहीं कहता आपके यहाँ होता होगा, किसी केस में किसी ने इनवॉइस जनरेट किया, वो सप्लाई नहीं होनी है, और नेक्स्ट डे उठा के उसने इनवॉइस कैंसिल कर दिया, आपने सिस्टम से एंट्री डिलीट कर दी, तो ये इस तरह की चीजें भी नहीं हो पाए. देखिए, GST law is a law, जैसे when we were very young, so initially we used to use a pencil, and the benefits of using a pencil is that there is a rubber, you can erase that whatever you did wrong, and you can write that again at the same place from the pencil. But then as we grew up, we started using a pen, a ball pen, and once you write anything from a ball pen, if that is incorrect, you cannot delete it, you can only strike it off and do the necessary correction thereafter. Similarly, when your systems are completely in your hand and you're not doing real-time reporting, it is like using a pencil. I'm just giving you a very raw example, आपको बस समझाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. इसका लीगली कोई बेसिस नहीं है, मैं बस आपको प्रैक्टिकली एक एस्पेक्ट दे रहा हूं कि once you get covered under e-invoice, तो आपने एक बारी पोर्टल पे चढ़ा दिया, तो पहले तो उसका एक यूनिक आईआरएन बन गया. यूनिक आईआरएन बन गया तो उसको आप अगर कैंसिल भी कर सकते हैं तो 24 आवर्स में कर सकते हैं. 24 आवर्स के बाद वो कैंसिल नहीं होगा. कैंसिल नहीं होगा तो क्या आप उसको कभी ई इनवॉइस काट दिए तो मतलब सामने वाला मना कर रहा है मुझे गुड्स नहीं लेने, तो भी क्या आप सेल हुई गई, टैक्स देना ही पड़ेगा? नो सर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट नोट्स. You can raise a credit note and you can annul that.
इनफैक्ट इवन क्रेडिट नोट्स आर कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग, उस पर भी हम आएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर्ड हैं। बट द मीनिंग इज आप ये नहीं कह सकते कि वो इनवॉइस ही में सिस्टम से हटा दूं, नहीं। सेल आपने करी थी, करने की कोशिश करी थी, इनवॉइस बनाया था, नहीं हुआ, आपने क्रेडिट नोट रेस किया और इस तरह से एक ट्रांजैक्शन चेन हुई, तो ये गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड, एक एविडेंस चेन बन जाएगा। इसी से रिलेटेड एक आरओसी में भी आप देख रहे हैं कि एक ऑडिट ट्रेल की रिक्वायरमेंट है जो लॉ में कोशिश करी जा रही है इंप्लीमेंट करने की, सो दैट there is a sequence, there is a chain for everything, there is nothing which gets erased from the system। और उसके लिए जो हमारे टैली के दोस्त हैं वो सेपरेटली आपसे बात करेंगे। बट देन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट till now we were basically doing our compliances using a pencil, but now is the time to use a pen. It will reduce the chances of fake GST invoices, and only genuine ITC can be claimed, as all invoices need to be generated through the GST portal, all meaning B2B and specifically covered export and deemed export. Since the input credit can be matched with the output tax details, it becomes easier for GSTN to track fake tax credit claims. जैसा मैंने कहा, आप जेन्युइन बायर हैं, जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, आपने किसी से परचेज कर लिया, आपने किसी नोन से परचेज किया बट उसने किसी अननोन से परचेज कर लिया और वो फेक निकल गया, तो होता क्या है कि पूरी क्रेडिट चेन खराब हो जाती है। तो टैक्स डिपार्टमेंट, डीजीजीआई डिपार्टमेंट सारे टैक्स पेयर्स को पकड़ता है और कहता है कि आपने भी गलती करी, आपने भी गलती करी, आपने भी गलती करी, आप भी आइए टैक्स जमा कराइए, आप भी आइए, एंड इट इज अ हैसल, इट इज अ पेन। Now, once this e-invoicing is there, first of all, it becomes a stricter, stronger compliance. You can be with peace of mind if you're properly doing business, willing to pay properly taxes, and you don't want to get covered under any unnecessary hassles. This will ensure your genuinity. आपने एक बारी इनवॉइस पे परचेज कर लिया, then for the government to say fake invoice, this that makes a very weak claim on the government's part. Even otherwise, it is a very weak claim, but that is a topic for another day. Contents of e-invoice, क्या contents होंगे invoice में, क्या क्या details हमको देने पड़ेंगे। देखिए, वैसे तो there is a form which is prescribed, you pull in the details, then there is an Excel file also, there is a JSON file also. And interestingly, with the implementation of GST, tax consultants have also become computer or technology consultants, but I would specifically restrict myself from going into that domain. There are two reasons for it. I'll broadly stick to the legal and law aspect of it. देखिए, बिजनेसमैन का प्राइमरी कंसर्न होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, सेल्स को ग्रो करना, प्रॉफिट्स को ग्रो करना। आज एक बिजनेस को करने का तरीका, और प्रॉपरली अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है आगे, तो या तो आप खुद बैठकर कंप्लायंसेस कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द राइट टूल्स, राइट mechanism available with us, and hence it is very very important that you get the right technology support for doing that procedure. Otherwise it is a complicated procedure, you may intentionally or unintentionally make some mistakes. So e-invoice basically adheres to GST invoicing rules. तो जो GST invoice rules में आपको 16 चीजें बताई गई हैं, 16 पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, परचेजर का नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट कोड ऑफ सप्लाई, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, टोटल वैल्यू. So all these details have to be there. It is the same. It is just that in addition to that, you also need to have put that data on the invoice portal, and once you do that, you get a IRL and a QR code. Other than that, there are certain specific requirements for certain sector industries, like for certain specific industries, more details आपको और देने हैं. And the mandatory sections inter alia include. So there are, while it is important that you mention all the details, but certain basic details are absolutely mandatory, which is supplier information, recipient information, invoice item details, document total,
and there are 2 mandatory annexures. So what all documents? E-invoicing doesn't mean that only invoices have to be reported. No. E-invoicing also includes invoices by the supplier, that is one. Credit notes by the supplier where you are recovering your GST, that is GST compliant credit notes. Third is debit notes by the recipient, that is where you must have raised debit notes for charging additional GST against that also, and any other document as may be notified under GST law. So these are the primary aspects of e-invoicing under GST. I think I have some time at my discretion. I will quickly take up those queries and then we will shift back this session towards the further discussion. So Snehal is asking, what is the period in which you need to generate IRN number? It is 30 days from the date of invoice. Can you please confirm? So Snehal ji, what I can confirm to you is that invoice reference number reporting should be done on real-time basis. First of all, there are multiple challenges, practical challenges. Let me first talk about the practical challenges where you're saying that up to 30 days I can wait from the date of invoice. If it is an invoice for goods and if you're waiting for 30 days for generating the IRN, means you will generate the EV bill accordingly thereafter and the invoice will not become a proper invoice until IRN is generated. It will create challenges for you for such a big difference between the invoice date and the IRN number. So it is suggestible that you please keep IRN number and invoice date as close as possible to the invoice generation date. Any further queries? I see only one queries is there, otherwise. So Saloni is asking, we are generally raising invoices at the last day of the month. Then we should continue the process. Can we continue with the process to raise at month end? See Saloni, here the law says that ideally it should be closer to the actual date of supply, but if you've not mentioned whether it is supply for services or goods, I'm presuming it is services. If it is services, you can continue to it is services, you can continue to raise at the end of the month. Typically service arrangements are monthly only in nature. You can continue to raise at month end and accordingly raise the invoices and generate the invoices according to that. There is no problem with that. Once e-invoice generated and if any modification, some BWL is asking. So once e-invoice is generated, no modification can be done. It can only be cancelled within 24 hours. Amit ji is asking, can we raise credit note of breakage expiry goods in pharma sector? Amit ji, you can certainly raise a credit note provided you don't breach the time limit prescribed in the GST law. So September time limit, which has now been extended to October by this budget, आप उस टाइम लिमिट में अगर आपके गुड्स एक्सपायर हो रहे हैं, आप क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बियॉन्ड दैट टाइम लिमिट आप क्रेडिट नोट रेज नहीं कर पाएंगे. So Nayana Mandke is asking whether transporter copy should be given of e-invoice. So see, generally Nayanji, IRN basis also this works, QR code basis also this works, but practically people are giving copies of e-invoices so that there is no challenge on the road when the goods are being transported. Yes, so it's you. देखिए law तो ये कह रहा है, मैंने आपको दिखाया साफ साफ कि आपको 3 कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कॉपी बनाइए, वो कॉपी ओरिजिनल बायर को भेज दीजिए, तो वो कॉपी ट्रांसपोर्टर के साथ भेजिए along with the EV bill so that your consignment is safeguarded.
Akashji, you need to identify if there is a difference between Tally invoice and your e-invoice portal. You need to understand why is there the difference and accordingly take up the rectification measures. There cannot be a blanket answer. E-invoicing is applicable for all, Malik Saab, unless specifically excluded, and the exclusions I've already covered, you're not covered in the exclusions. E-invoicing, there is no exclusion, Srinivasanji, for the items that you are mentioning, okay? Once aggregate turnover includes these items also, and hence you may be covered. Yes, Balaji, you are right. Balachandraji, you are right. Nayan Mankeji, yes, e-invoice is mandatory for exporters. Rajeshji is asking, if I raise credit note for a customer, but he does not include debit note in his GSTR return, will I be able to reduce my tax liability as per credit note? So Rajeshji, I think more than the requirement of him raising a debit note, the requirement is that he reverses that ITC. As long as he reverses that ITC, you can claim an adjustment for tax pay. Sir, e-invoice and invoice are the same thing only. Invoice with IRN and QR code is referred to as e-invoice. So you have to take a print for that only. Yes, Balaji, you can mention, you can create two separate sequence numbers for B2B and B2C. No, for reversing ITC, isn't debit note the only way? So debit note is whatever way he chooses to, not necessary that he has to issue a debit note, okay? He has to simply reverse the ITC in his ITC ledger. And whatever accounting procedure he undertakes at his end, that is at his end. Law doesn't say that he has to issue a debit note. Law says as long as your buyer has reversed the ITC, you can take an adjustment for that tax liability basis the credit note that you've raised. Fine. So I think we'll just take up this last query and then we'll move on to the session, pass on the session baton to the Tally people for their deliberation. Any limit for generation of e-invoice, or we have to generate on all without any? So e-way bill has a limit which stays intact, but e-invoice, once you're covered under the turnover, you have to raise e-invoice for B2B supplies right since the first invoice. There is no exception. Thank you all. It was a pleasure addressing all of you. And now I pass on the baton. Thank you so much, Shashankji, for sharing your valuable inputs. And I am sure our audience would have got very insightful information. So now introducing and invite second speaker of the day, Mr. Ankit Khatwa. So Ankit is a manager GTM for North India in Tally Solutions Private Limited. He is associated with Tally for around 5 years now, and in his entire journey, he has been trying to address the issues faced by businesses in their day-to-day operations and helping them with the use of Tally. He has been a speaker in several MSMEs events and will help us understand how technology like Tally Prime can help us simplify our business operations. So over to you, Ankit. Thank you, Rakesh, and good morning to all the participants over here. And thank you, Shashankji, for clarifying, for giving all the inputs related to e-invoicing. I think the law part, the domain part has been very well covered by Shashankji. So I think it's now time to see how we can generate e-invoice through Tally. So I'm just sharing my screen. So we will see some practical aspect of the product, how we can able to generate e-invoicing with utmost simplicity. And we have been, as you are aware, we have been designing technology for our MSMEs since 3 decades. So we have kept it in our mind very, very well that if we design the software, whatever the compliance is coming, if it is very simple, then user would be definitely use that features with utmost simplicity. So we'll see each and everything today. I'm just sharing my screen. Just Rakesh, confirm me whether my screen is visible or not. It's visible, and your voice is crystal clear, audible. All right. Thank you.
So I'm just going to cover what are the things is coming new into Tally Prime. So we are coming up with a new release which is Tally Prime 2.1. एंड टैली प्राइम 2.1 में काफी चीजें हैं, जैसे आप हम देखेंगे आज ई इनवॉइसिंग के ऊपर ज्यादा बात करेंगे बिकॉज ई इनवॉइसिंग इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल for 20 crores and above. Those businesses are above 20 crores. So invoice उनके ऊपर applicable होने जा रहा है. तो invoicing को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे and we'll also talk about audit trail. Audit trail is also going to be implemented from 1st of April. So this is also important. So we have also coming up with this solution, entire solution with and simplifying all those things. And also we are coming up with digital signature because right now there are many things. Almost all the businesses are using digital signature, so we have also come up with this solution. So if I talk about the journey till now, सो कंप्लाइंस में हम हमेशा जो है हमारे कस्टमर को, एमएसएमई कस्टमर को हमेशा टाइमली हमने अपडेट दिया है, सो दैट हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो चीज कंप्लाइंस को मीट आउट कर पाए टाइमली, एंड और जो कंप्लाइंस की जो रिक्वायरमेंट है वो सिंप्लीफाई तरीके से परफॉर्म कर पाए और टाइमली उसको मीट आउट कर पाए. सो आप अगर देखें तो वैट 2005 में लागू हुआ था, तो उस समय पे हमने टैली में वैट को भी सिंप्लीफाई करके दिया था. देन जीएसटी 2017 में लागू हुआ था. So again we have made that things very easy in Tally. So हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उसको बहुत बखूबी तरीके से निभा पाए, मेंटेन कर पाए, टाइमली जो डेडलाइन था जीएसटी का उसको भी मीट आउट कर पाए. एंड अभी जो जीएसटी की जर्नी अभी कंटिन्यूइंग है, देयर आर मेनी थिंग्स आर कमिंग अप लाइक ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, तो उसको भी हम टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड ई इनवॉइसिंग भी लागू हुआ था 2021 में. सो उसको भी हमने दिया, जैसे शशांक जी ने अभी कवर किया. एंड आप सभी को पता है कि 500 करोड़ की जो कंपनीज थे पहले 2021 में जो लागू हुआ था अपना ई इनवॉइसिंग 500 करोड़ के ऊपर, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया था. बीच में फिर उसको डिक्रीज किया था गवर्नमेंट ने 50 करोड़ पे, फिर अगेन जो है 20 करोड़ पे उसको रिड्यूस कर दिया है. सो इनवॉइसिंग ऑलरेडी है टैली प्राइम के अंदर. टैली में जो लोग हैं तो टैली में नहीं है इनवॉइसिंग, टैली प्राइम में डेफिनेटली है. एंड अगेन audit trail is going to be implemented from 1st of April 2022. So that is also there. We are also coming up with this solution also. So हम आपकी संग में ही ये जर्नी कवर कर रहे हैं. एंड जो कंप्लाइंस की चीज आ रहा है वो उसको भी हम टाइमली टेकअप करके हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं. So e-invoicing is going to be implemented for those companies. Those are above 20 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर जिनका है 20 करोड़. शशांक जी ने पूरा लॉ पार्ट जो है कवर किया कि क्या 20 करोड़ का परव्यू क्या है. एंड 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेके अभी तक किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई बिजनेसेस हैं जहाँ पे 20 करोड़ से, सो उसके ऊपर लागू होगा. एंड नोटिफिकेशन आना भी चालू हो गया है. आई थिंक इसको लॉ पार्ट जो है बहुत डिटेल में शशांक जी ने कवर कर लिया है. सो वी कैन मूव टू द प्रोडक्ट आई थिंक. सो ई इनवॉइसिंग डिटेल्स कैसे लुक लाइक, कैसे ओवरव्यू अगर आप देखें कि इनवॉइसिंग का आप अगर देख पा रहे होंगे अभी, तो एक क्यूआर कोड होगा. एंड तो IRN जो है 64 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है 64 डिजिट का, तो वो भी आपकी इनवॉइसिंग में प्रिंट होके एंड बाकी जो आइटम, बायर डिटेल्स, कंसाइनी डिटेल्स इस तरीके से दिखेगा जब आप प्रिंट करेंगे. सो उसको देखेंगे अभी कैसे टैली प्राइम के थ्रू कैसे आप इजीली जो है ई इनवॉइसिंग को आप जनरेट कर पाएंगे और क्या क्या सिनेरियोज है, रिपोर्ट्स क्या क्या है. सो ऑल दोस थिंग्स, डिलीशन, कैंसलेशन, IRN अपडेट, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. आई थिंक इसके अलावा और कुछ चीजें मिसिंग नहीं है. सो उसको अगर हम इस चीज को अगर सिंप्लीफाई तरीके से अगर हम देखें, जैसे आज टेक्नोलॉजी अगर नहीं है उस चीज को करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे हैसल होते हैं. सो टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना बहुत आसान है. राइट टूल होना बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजी होना और राइट टेक्नोलॉजी होना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो व्हाट इज एन ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल? IRP क्या है? IRP जो है वो है ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है. इज द वेबसाइट ऑफ अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस बाय द नोटिफाइड पर्सन. सो IRP पोर्टल पे जो भी आपका इन्वॉइसेस आप वहाँ पे सेंड करेंगे, आप जो भी इन्वॉइसेस
जनरेट करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भेजना होगा, और वहाँ से जो है आपका IRN जो है जनरेशन करके आपकी जो इनवॉइसेस है उसमें अपलोड होगा। सो IRP पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले तो, एंड जो भी नोटिफिकेशन जो बिजनेसेस है इस परव्यू में, सो उनको पहले IRP पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो डू आई नीड टू प्रिंट IRN ऑन द इनवॉइसेस? IRN को प्रिंट करना is not mandatory. No, it's not. It's optional. IRN is anyway embedded in the QR code, which is one of the mandatory particular on the invoices. So you no need to print IRN in the invoices. It's not mandatory, but the QR code is mandatory. Any which ways we are giving both the things, IRN and QR code, both in the invoices, so that no question can be put on this front. So e-invoicing impact on the taxpayer. What is the impact on taxpayer? Why it is important? See, if you are coming into e-invoicing purview, if your business is coming under this purview and you supposed to generate e-invoice, if you are not generating e-invoice, then the invoice is no more compliant. I mean, you are not going to get the ITC, and your buyer is not going to take the ITC. So it is very, very important that if you are coming into this purview, then you should generate e-invoicing timely. So the impact on the taxpayer is like that: high level integration between taxpayer, ERP software and government portals such as IRP, e-way bill and GSTN portal. So जो भी आप अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे हम टैली की अगर बात करें, टैली इज फुली enabled for the e-way bill and e-invoicing, both the things. So require immediate attention from businesses process update standpoint. It means आपको टाइमली थोड़ा अपडेट होना होगा, जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी रजिस्ट्रेशन है, उसको टाइमली करके आपको प्रिपेयर होना होगा 1 अप्रैल तक, सो दैट फ्रॉम द डे 1 whenever you are generating invoice, you are just going to send that invoice to the IRP portal to get the things done. So if you delay, then things would be going into a different direction. But if you are doing all the things right, then you no need to worry about all these things. So preparedness is must. Preparedness, you have to do the preparedness beforehand for invoicing. And if you just going to manage all things from Tally Prime, so things are going to be very, very easy for your businesses. So what are the preparedness for invoicing? So taxpayer will be receiving a communication from the department saying that your organization is coming under the invoicing purview. So you need to prepare for these things. And on receiving the communication, taxpayer will log into the IRP portal for the registration. And in case there is no communication is coming, or something, some things is there, you have a confusion in your mind whether your organization is coming under this invoicing or not. So better you can just take your GSTN to the GSTN portal and check there whether your company is coming under this compliance or not. So that you can also do. Complete registration process by providing required details. Whatever required details is there, you just need to put all the things, and you need to register, complete the registration, and select their preferred GSP in case of API based invoicing generation. Yeah, this is very, very important. One thing is IRP portal registration. The second thing is the GSP API based invoicing generation. If you wish to generate e-invoicing from Tally Prime, then you have to select a GSP, Tally India solution as a GSP from the IRP portal itself. So that you will have a login credential, different credential. IRP portal registration is different, and GSP API based invoicing generation login is different. So people may get confused, and they just they put IRP portal login in Tally Prime to generate invoicing, and it gives notification saying that your login credential is invalid. So be careful about this, and it is just one-time creation kind of things. After creating your API based invoicing generation login credential for first time, then you need to continue with that login credential
for rest of the time. So start generating e-invoice from date of applicability. Yes, if you do all these things preparedness well beforehand, then you will be doing things from the first day itself. So impact of e-invoice on the purchase cycle. So what impact is going to be met into your purchase cycle. So as I said, if you are not validating whether your vendor is coming into this purview, e-invoicing purview or not, if you are just taking invoice and you are not aware, if they are not compliant, if they are under e-invoicing compliance, but they are not generating e-invoicing, so that invoice is no longer valid for your ITC. So you need to be careful, and you need to check that whether the e-invoice, that invoice is supposed to be registered e-invoicing or not. If it is not, then that just a piece of paper, nothing beyond that you will not get anything. I mean, the ITC will be in a in a trouble. I think you may lose out of the ITC. So you need to check this. You need to coordinate with your vendors, and you need to cross check each and every invoice whether the invoice is supposed to be under e-invoicing or not. So document to be reported to e-invoice system. Types of transaction, what are the transaction is going to be reported into e-invoicing system, and it already been clarified, so I'm just putting it in a very simple manner, like B2B and B2G tax invoices are coming into this, and export invoices, reverse charge invoices, and credit note, debit notes. So these are the transaction you need to, whenever you are doing, if you are coming into this purview, so you need to generate e-invoice for this. And B2C is not covered yet. So, but if you are doing this transaction, then you need to generate e-invoicing. And whether e-invoice is applicable for invoices between two different GST and under same PAN. Yes, it is applicable. What are the channels of help and feedback for e-invoicing? For any help and for any kind of, if you're getting technical glitches, anything, you can just raise a ticket to selfservices.gstsystem.in, and if you have any feedback, suggestion, anything related to invoicing, so you need to do it in this site, e-invoicing, in this email address, e-invoicing@gstin.org.in. So technology for e-invoice. What technology should you use to make these things very simple for your organization, so that your productivity, your compliance, get met with these things with very simply and efficiently. So if I just show you how e-invoicing is going to take place through a simple presentation, simple video presentations, it will be like this. Supplier need to send the invoice, whatever invoice you are generating, invoice, your transaction you are doing, you need to send it to the IRP portal, which is the invoice registration portal. And what IRP portal is going to do, IRP portal is going to check that the invoice which you are sending, whether it is a duplicate, whether it is whether it is a correct one, whether all the things are required things are made into the invoice, HSN, it will check HSN, GST buyer, GST, and all those things. And after checking after doing all the validation, it will just send the in returns, it will send digitally signed QR code IRN to the supplier, saying that yes, the checking has been done, and the QR code and the IRN has been generated, and it will get back to the supplier. And what IRP portal it will do, it will send the authenticated payload to the GST system as well.
so that it will get stored into the GST system, saying that this invoice is compliant and it has been against that the QR code and IRN has been generated, so that the second time if by mistake anything is come up related to this invoice, it will send a rejection note saying that it is a duplicate, or it has been already this invoice has already been generated, saying that. So it will also send if it is coming under eBay bill, if you are generating both the things, e-invoicing and eBay bill, it will also send to the eBay bill portal related to eBay bill informations. So GST सिस्टम में ई इनवॉइस का इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा GST सिस्टम में. GST सिस्टम नाउ हैज ए यूनिक इनवॉइस विद ए यूनिक नंबर. जैसे मैंने कहा GST सिस्टम में ये यूनिकनेस जो है इनवॉइस से रिलेटेड सब स्टोर हो जाएगा, and it will also store the GSTR1 of seller gets updated, and GSTR2A and 2B of buyer gets also updated. And buyer को क्या मिलेगा? Buyer can use the QR code to verify the invoice whether it is a genuine invoice or not, and buyer can use the ITC related to the invoice in the GSTR2A 2B. So this is a complete flow. It is it's look like a little रिलीवेंट जब भी हम इस चीज को फॉलो करेंगे. सो सॉफ्टवेयर के अंदर जब करेंगे तो आप जस्ट सिंगल क्लिक में होगा. वी विल सी इनटू दैट हाउ इट विल टेक प्लेस, बट दिस इज हाउ द फ्लो इज complete flow of the invoicing generation. So you now need an integrated system to remain on top of your compliance. Yes, you need a right tool, right application, right software, right technology to do all those things in a proper manner. So your team, your business, no need to think about anything. So you just need to have a good software or technology to drive this things. So what you need to do is simple and powerful integration system to generate invoice without disturbing your business process. Yes, definitely. So what you need to do is just add E to your invoice without with utmost simplicity. Yes, you just need to E, and then your invoice is going to be invoice compliant. Yes. So टैली में अगर हम देखें, टैली में आपको फर्स्ट थिंग्स जो आपको करना होगा वो क्या करना होगा, जो कंपनी लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है F11 में फीचर लेवल पे ई इनवॉइसिंग को आपको एप्लीकेबल करना होगा. जैसे ही डेट आपका 1 अप्रैल से लागू होगा तो उसी डेट से आप एप्लीकेबिलिटी करेंगे. अभी अगर करेंगे मेरे ख्याल से आपको अभी नोटिफिकेशन आना चालू हो गया होगा. सो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करके सब कुछ रेडी करके रख लेंगे. देन द मोमेंट द 1 अप्रैल from 1st of April you can just go and applicable just enable these features in the product itself. Then you can start using e-invoicing from Tally Prime. So what we are ensuring, you generate e-invoice very effortlessly without any hassle. So we'll see how we are just going to generate. So what it will happen, Tally Prime से जो information होगा वाया GSP होते हुए ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएगा, एंड ई इनवॉइसिंग पोर्टल से आपका जो ई इनवॉइसिंग रिलेटेड जो QR कोड है एंड IRN जनरेशन है, फिर वापस GSP होते हुए आपके टैली प्राइम के अंदर अपडेटेड हो जाएगा. सो GSP का परव्यू जो है हम काफी बार बात कर चुके हैं अभी एज ए कंपनी GSP कंप्लायंट, एंड आप टैली को ही GSP सिलेक्शन करके आपका लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे ई इनवॉइसिंग के लिए. So this is how it will take place. So we'll see कि अभी हम देखते हैं कि एक सिंगल ई इनवॉइसिंग कैसे आप जनरेट करेंगे. सिंगल ई इनवॉइस आप टैली प्राइम से कैसे बहुत सिंप्लिसिटी से कर पाएंगे. जैसे ही आप एक ई इनवॉइस जनरेट करते हैं उसमें बिल्कुल वैसे ही आपका प्रोसेस है, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं है. देयर इज नो चेंज इनटू इट. First thing, you have enabled the e-invoicing feature in company level, saying that yes, I am going to generate e-invoicing from 1st of April. And जैसे ही आपका invoice होगा, then you can see here it is asking you want to generate a e-invoice, provide e-invoicing details. You need to do yes. जैसे ही आप yes करेंगे, it will take you to the second page saying that bill to place कौन सा होगा, and उसके next में it will ask you to, do you want to generate e-invoice? You need to put yes,
एंड यहाँ पे जो है यू नीड टू पुट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. GSTN नंबर it will come automatically, but you need to put your username and password. This username and password is different from the IRP portal login credential, which I have mentioned earlier. Like you have to generate two the second जो GSP choose करते हुए जो login credential बनाएंगे आप API integration के थ्रू जो आप login बना रहे हैं वो उसको आपको यहाँ यूज करना है. बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं. सो आपने जो हमारे जो आपके प्रेफर्ड पार्टनर होंगे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ एनीवेयर यू नीड एनी असिस्टेंस वो आपको हेल्प कर देंगे. अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल टू डू दिस ऑल्सो. आप खुद ही आप कर पाएंगे. सो जैसे आप यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड आप यहाँ से एंटर करेंगे इट विल जस्ट कनेक्ट टू IRP पोर्टल टू सेंड द invoice information to IRP and कुछ microseconds के अंदर you'll see the e-invoice generation has done successfully. Then you can come to print preview to see whether all the information printed or not. Now you can see. So it has already mentioned the QR code is coming on right top of the invoice, and on the left side of the invoice the IRN number is the 64 digit alphanumeric special character. IRN is already mentioned, acknowledgement number also mentioned, acknowledgement date, and all other information of seller, buyer, and all the things has already been mentioned. So आप देख सकते हैं कि कितने सिंपली आपका इनवॉइस जनरेट हो गया. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टैली प्राइम में ही आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आपका एक जनरेट करना होगा आपको GSP चूज करते हुए API इंटीग्रेशन के लिए. देन आप जब भी इनवॉइस बनाए आपको यस करना है. अगर यस नहीं कर रहे हैं, आप एक साथ नहीं जनरेट करना चाहते हैं इनवॉइस, मतलब जब भी आप इनवॉइस कर रहे हैं सिंगल सिंगल आप नहीं करना चाहते हैं, आप एक साथ करना चाहते हैं. एक साथ मीन्स एंड ऑफ द डे देयर आर ऑल्सो कंपनीज आई हैव सीन वो क्या करते हैं कि एक आखिरी डे एंड पे सब इनवॉइसिंग जनरेट करना चाहते हैं. So we have also that flexibility to send individual or selective or bulk invoice to IRP portal. Individual भी कर सकते हैं, कुछ selective भी कर सकते हैं, कुछ bulk में भी कर सकते हैं. So we can see how we can generate e-invoicing in bulk. So what you have to do is, if you remember, जैसे ही अभी हम सिंगल e-invoicing generate कर रहे थे, तो वहां पे क्या yes करके एक ऑप्शन पूछा था आपसे कि आप do you want to generate e-invoice. आप वहां पे नो करके चलिएगा, सो दैट आप लेट से आपको 10 इनवॉइस एक ही टाइम पे आपको जनरेट करना है, आपको मिड ऑफ द डे करना है या एंड ऑफ द डे करना है, तो आपको वो ऑप्शन एक ही जगह दिख जाएगा. देन यू कैन जनरेट इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन जनरेट द इनवॉइस इन बल्क मोड. सो बल्क मोड पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग है, 4 इनवॉइस जो है पेंडिंग आ रहा है. सो यू हैव नीड टू गो टू एक्सचेंज and you can see all the invoices are coming, those are pending. So now here you can select, आप कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स आप दो सिलेक्शन करके आप चाहते हैं कि दो ही का ही आप अभी इमीडिएटली इनवॉइसिंग जनरेट करें, देन यू कैन डू इट. एंड यहाँ पे फिर लॉगिन क्रेडेंशियल आपको यूज करना होगा. एंड ये लॉगिन क्रेडेंशियल ऐसा नहीं है कि हर बारी आपको यूज करना है. इट विल इफ यू आर जस्ट पुटिंग योर इनवॉइसिंग लॉगिन क्रेडेंशियल, सो इट विल रिमेंबर फॉर 6 hours. 6 घंटे के लिए ये याद रखेगा. अगर आप टैली को बंद कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, फिर आपको करना पड़ेगा. इफ यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग टैली, सो 6 घंटे तक आपका ये इट विल होल्ड द लॉगिन क्रेडेंशियल एंड यू नो नीड टू मेंशन लॉगिन क्रेडेंशियल एवरी टाइम. सो आप अभी देख सकते हैं 2 इनवॉइसिंग जो है वो जा चुका है. फिर अगर आपको और बाकी का करना है, आप कैन जस्ट सेलेक्ट एंड प्रेस टू सेंड, तो ये जो है आपका इनवॉइसिंग जनरेट कर देगा एंड इनवॉइस में प्रिंट कर देगा. So this is how you can generate e-invoicing in single mode or bulk mode. So it is very simple. Now you can also you can understand. So अगर आप जो अभी आपने bulk में send किया था, generate किया था, अगर you can go and detail it, you can see आपका सारा जो है information आ चुका है कि acknowledgement number क्या है and इसमें आपका IRN क्या है, सप्लायर का GSTN क्या है, किस डेट पे जनरेट हुआ है, तो ऑल दोस थिंग्स. सो हमने ये दोनों चीज़ें देख लिया है एंड आई थिंक इसको आप
बहुत एफर्टलेसली जो है आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ई वे बिल करना है जनरेट ई इनवॉइसिंग के साथ, if the threshold limit is there is some different as per the state, so अगर आप ई इनवॉइसिंग के साथ ई वे बिल एक ही साथ आप जनरेट करना चाहते हैं, that is also possible. So we can also see into it कि कैसे आप ई इनवॉइसिंग के साथ ई वे बिल भी जनरेट कर पाएंगे। सो जब भी आपका ई इनवॉइसिंग में थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज होगा, देन इट विल आस्क यू टू जनरेट ई इनवॉइसिंग अलोंग विथ योर ई वे बिल। सो आपको बस एक नीचे का जो ऑप्शन है आपको उसको याद रखना होगा। आप अभी देख सकते हैं, अभी तक जो है अगर इस पे देखें, जस्ट लेट मी जस्ट टेक यू फॉरवर्ड। हाँ, अभी तक जो है ई इनवॉइसिंग ई वे बिल अब आया, जैसे थ्रेशोल्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले तक आप जब पहला एक फर्स्ट आइटम हमने सेलेक्ट किया था उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा था, तो वो ई इनवॉइसिंग खाली आ रहा था। आप देख रहे हैं ई इनवॉइसिंग आ रहा है। जब जैसे ही अमाउंट पुट होगा देन इट विल कम स्टार्ट शोइंग ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग ऑप्शन टुगेदर। सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट। सो यहाँ पे क्या है कि आपका ऑलरेडी जो है लेजर से, लेजर मास्टर से सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है, तो ऑटोमेटिकली पुट आ रहा है। एंड यहाँ पे जो है आपका जो पिन कोड से पिन कोड डिस्टेंस है वो भी आपको एक बार अगर आपने मेंशन कर दिया, देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड टैली विल रिमेंबर एंड you no need to mention distance for every time. So सेकेंड पेज में आपको ई वे बिल की इंफॉर्मेशन जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी उसको मेंशन करने के बाद you just need to send it to the IRP portal saying yes you want to generate e-way bill and e-invoicing together. So दोनों चीजें जो है एक साथ simultaneously दोनों चीजें जनरेट हो जाएगा। yes. yeah. So you just need to put yes and login credential for it. And जब भी आप प्रिंट करने जाएंगे then you will see together both the things. And the first page you will see invoicing and the second page you will see e-way bill information. And first page itself में ही e-way bill की information जो है, e-way bill का जो नंबर है वो भी प्रिंट होके आएगा आपका। so yes, यहाँ पे अगर आप देखें so sorry, यहाँ पे अगर देखें तो ई-वे बिल के साथ साथ ई इनवॉइसिंग के साथ साथ ई-वे बिल मेरा जनरेट हो गया है। सो इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टैली प्राइम से कैसे चीजें जो है सिंप्लीफाई तरीके से हो रहा है। इन केस इफ यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग ऑफलाइन के थ्रू अगर तो चीजें नहीं चल पा रहा है, ऑल्सो वी हैव प्रोविजन टू क्रिएट जेसन फाइल से आप जाके यहाँ से जेसन एक्सपोर्ट करके टैली प्राइम से आप उसको जाके ऑफलाइन टूल के थ्रू ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने सारी चीजों को भी ध्यान रखा है कि जो रिपोर्ट्स हैं इनवॉइसिंग का, तो उसको भी आप सारे रिपोर्ट की कौन कौन से इनवॉइसिंग जो है आपका अभी पेंडिंग है और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कौन कौन से है जो करेक्शन के रिक्वायर्ड है वो, एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट HSN, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड, रिजेक्टेड बाय इनवॉइसिंग सिस्टम कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ, HSN कोड यहाँ पे इनवैलिड है तो इस वजह से जो है ये रिजेक्शन हुआ है, एंड पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ इनवॉइस सिस्टम जो पेंडिंग है अभी जनरेशन के लिए पेंडिंग है। सो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगा। कैंसिलेशन के लिए कौन कौन से इनवॉइसिंग आपका पेंडिंग है वो भी दिखेगा, और कौन कौन से इनवॉइस जो है आपने एक्सपोर्ट किया है, इनवॉइसिंग एक्सपोर्ट किया है, इट मीन जो ऑफलाइन आपने जेसन के लिए आपने एक्सपोर्ट किया था उसका भी काउंट आपको दिखेगा। वाउचर इन्फॉर्मेशन मिसमैच विथ QR कोड, वाउचर जो है मिसमैच हो गया, किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, कुछ एडिशन हो गया तो उसका भी IRN जनरेटेड बट IRN अपडेटेड विदाउट QR कोड। तो ऐसा भी हो सकता है कि IRN को किसी ने ऑफलाइन उसको डाल दिया है इनवॉइस में, अपडेट कर दिया, लेकिन QR कोड तो ऑनलाइन से ही अपडेट होगा, तो वो जो है वो उसका भी रिपोर्ट आएगा। IRN कैंसल्ड
आयरन कैंसल्ड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग सिस्टम, ई इनवॉइसिंग सिस्टम जो कैंसल्ड हो गए हैं वो, एंड मार्क एज आयरन कैंसल्ड, जो आपने मार्क किया हुआ है अभी सेंड नहीं किया है, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। यूजर एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन, मतलब ये हो सकता है कि वो ई इनवॉइसिंग के लिए शायद वो ट्रांजेक्शन है लेकिन गलती से यूजर जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया है, तो ये भी सिनेरियो हो सकता है। सो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, ऑल द रिपोर्ट्स आर देयर फॉर द इनवॉइसिंग। कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होगा जो इसके बाहर आपको जरूरत पड़ेगा। एंड देयर इज ऑल्सो ए फिल्टर। आप अगर डायरेक्ट जो है आईआरएन और सिस्टम में अगर जनरेट हो रखा है किसी और ऑफलाइन टूल के थ्रू, अगर आप उसको आईआरएन अपडेट करना है क्यूआर कोड के थ्रू, तो आप भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं गेट आईआरएन इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। कैंसिल करना है आपको, यू कैन ऑल्सो डू कैंसिलेशन फ्रॉम हियर। सो सारी चीजें ध्यान रखा गया है। आपको और कुछ ऑफलाइन मतलब प्रोडक्ट से आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें जो है इसमें हमने वो किया है, अपडेट कर दिया है। आईआरएन को आप पोर्टल के थ्रू अपडेट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड भी अपडेट कर सकते हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड कौन कौन से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी जो इनवॉइसिंग जनरेट होने के बाद मॉडिफाई हुआ है, आईआरएन में किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, दैट ऑल्सो। and due to duplicate entry, mistakes, order cancelled, etc., ये सब भी ट्रैक हो पाएगा। so invoice rejected by IRP, understand the reason and do necessary revision। जो हमने देखा अभी कि IRP पोर्टल रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ HSN, इन HSN नंबर करेक्ट नहीं है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करके आप उसको भी उसका एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एंड डोंट गेट, मतलब अगर आप कुछ एरर आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये टैली का एरर है या जीएसटीएन पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उस वजह से आपका ये इनवॉइसिंग नहीं जनरेट हो पा रहा है, यू जस्ट नीड टू कम टू दिस पेज एंड टैली हेल्प के अंदर जाके जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, वेयर इज द इशू। So you can see these kind of things. If service is not available from Tally, so you can see the status, the cross sign that Tally Prime has a problem, or if it is a problem of the NIC portal, then you can also see that. So you will never need to go out of the product for invoicing. Yes. So हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा Tally Prime से, आप Tally Prime से ही सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। And I think I have covered all the practical aspect of e-invoicing। आप बस आपको सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। अगर आप टैली प्राइम में अभी नहीं है, ERP 9 में है, तो आपको टैली प्राइम में अपग्रेड करके आना होगा, देन आप रेडी हो जाएंगे इनवॉइसिंग जो है टैली प्राइम से जनरेट करने के लिए। देन ऑडिट ट्रेल आल्सो कमिंग इनटू पिक्चर फ्रॉम 1 अप्रैल। सो ऑडिट ट्रेल के अंदर जो है, ऑडिट ट्रेल का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज्ड बाय बिजनेसेस दैट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ MCA शुड हैव एन ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग फीचर्स। सो जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है बिजनेसेस के अंदर, और अगर वो MCA के परव्यू में है वो बिजनेसेस, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल का परव्यू, ऑडिट ट्रेल का जो लॉग है वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीचर होना चाहिए। अगर वो नहीं है वो कंप्लाइंट नहीं होगा। सो वी हैव आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इट, वी हैव ऑलरेडी made it simple. We'll also see the product very soon. We are also coming up with this complete features of audit trail। audit trail का जो अभी तक जो इंटरप्रिटेशन है उसको देखते हुए हमने काफी चीजें जो है डेवलप किया है। सो व्हाट इज ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग? ऑडिट लॉग जो है वो ये कहता है कि एन ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग इज a log of financial transaction। However, the audit trail edit log is not simply a log, it is listed in order step by step and serves as proof of a transaction history right from recording to tracking all changes that may take place। Yes। सो ऑडिट ट्रेल का जो प्रीव्यू है ये है कि जब से एक ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और उसका हिस्ट्री को एक लॉग मेंटेन करना, उसकी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एंट्री ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, एंड ये जो है पूरा एक फाइनेंशियल ईयर तक जो है उसका पूरा हिस्ट्री मेंटेन होना चाहिए एंड उसका लॉग बनना चाहिए कि वो किस डेट पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ था एंड उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है,
अगर वो डिलीट हो रहा है, किस रीजन की वजह से डिलीट हो रहा है, तो ऑल दोस थिंग्स इट शुड बी स्टोर्ड इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। उसकी हिस्ट्री, उसकी लॉग पूरी मेंटेन होनी चाहिए। तो जो परव्यू है ऑडिट लॉग का, वो ऑडिट ट्रायल का ये है। इम्पैक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन कंपनीज, क्या इम्पैक्ट है कि कंपनीज को क्या करना चाहिए। जो 1 अप्रैल में जो एमसीए परव्यू में जो कंपनीज हैं, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो उनको एडिट लॉग की फैसिलिटी दें एंड ये चीज़ें वो कर पाएं। एंड अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, देन दे शुड लुक फॉर अ सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी इस सॉफ्टवेयर को सर्टिफाई करें एंड नीड टू move early before 1st of April 2020 to handle the changes required in the application. So तैयारी थोड़ी सी, जो preparedness है वो जल्दी होना चाहिए। It is very looks very simple, but जब हम practically अगर चीज़ों को नहीं देख रहे हैं उस एंगल पे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। एंड जो भी पेनल्टीज होगा इट्स नॉट आर हैंड। सो जो भी कंप्लाइंस परव्यू में आएगा, जो भी पेनल्टीज होंगी वो अगर नहीं मेंटेन होगा तो वो भी है। सो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल के परव्यू में कौन कौन सी कंपनीज हैं अभी जो कवर हो रहे हैं, वो है ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 1 पर्सन कंपनीज, और कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज एंड निधि कंपनीज। और जो नहीं हो रही हैं, जो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं जिस परव्यू में, दैट आर इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स लिमिटेड, LLPs। सो ये कंपनीज जो हैं इस परव्यू में नहीं है अभी एमसी के अंडर। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग नोटिफिकेशन, जो इंटरप्रिटेशन है वो इस मेजर एस्पेक्ट्स जो है इसको एम्फसाइज करता है, which are tracking of each changes made in the transaction, captures date when such changes were made, ensure that audit trail cannot be disabled. Yes, this is very important कि जो भी एडिट लॉग की परव्यू में आएंगे जो कंपनीज, देख सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो फीचर जो है एडिट लॉग का वो डिसेबल एनेबल हो पाए। एडिट लॉग एडिट ट्रेल फैसिलिटी शुड हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। यस, पूरा थ्रू आउट द ईयर, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो पूरा थ्रू आउट द ईयर मेंटेन होना चाहिए। ऑडिट ट्रायल शुड नॉट बी टेम्पर्ड विद एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब उसकी जैसे हमने कहा कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो यूजर जो है उसको ऑन ऑफ कर पाए। बाय डिफॉल्ट फीचर एनेबल्ड होनी चाहिए और उसमें टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल टू बी preserved as per requirement of the record retention. Yes, CA need to certify if the software used is compliant or not. So audit trail features to look for in accounting software. Accounting software जो भी अभी इस्तेमाल हो रहा है, so उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि डेट स्टैम्प होनी चाहिए कि the audit trail should record the details of action performed in the system date wise, जिस डेट पे रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांजेक्शन उस डेट। एंड और जो फीचर्स है एडिट लॉग का, जो फीचर्स है वो एनेबल्ड रहे थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर एंड उसमें कोई टेम्परिंग ना हो पाए। एंड जो हिस्ट्री है स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज, ये जो क्या पहला रिकॉर्ड क्या था, सेकंड रिकॉर्ड क्या है, थर्ड रिकॉर्ड क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री जो है, चेन जो है, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर के अंदर बना रहे। सो ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग फीचर्स टू लुक फॉर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Additionally, you may also look for user details in the audit trail. किस यूजर ने इसको चेंज किया है, किस यूजर ने एंट्री किया था, किस यूजर से ये चेंजेस हुए हैं, एंड उसके वर्जन्स क्या है, डिफरेंट वर्जन्स क्या है, फर्स्ट वर्जन क्या था, सेकंड वर्जन क्या है, इस चीज को भी हम कैप्चर कर पाए और पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस चीज को हम चेक कर पाए। सो दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू ऑडिट ट्रायल। सो टैली प्राइम एडिट लॉग है तो ऑडिट ट्रायल इजी है, डेफिनेटली इसको हमने बहुत ही इजी तरीके से डिजाइन किया है सो दैट यूजर आज जैसे ही काम कर रहा है टैली प्राइम में, सो वैसे ही काम करता रहे और बाकी चीजें जो है एडिट लॉग की कंप्लायंस परव्यू में जो भी चीजें नोटिफाई हो रहा है तो वो चीजें मेंटेन हो जाए पीछे से। So what all you need to do is to upgrade to Tally Prime to Edit Log, and we will take care of rest of the things. The product will ensure you are fully compliant from day one. You don't need to change anything. Continue operating the product like you always have. And आप फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आपके पास दो कंपनी है, एक कंपनी एडिट लॉग परव्यू में आता है, एक कंपनी एडिट लॉग में नहीं है आ रहा है, सो आप को एग्जिस्टिंग में एक ही लाइसेंस है, दो सेटअप यूज कर सकते हैं एंड उसको आप
यूज कर सकते हैं। एंड अपग्रेड फ्री है टैली प्राइम में आने के लिए, अगर आपका टैली जो सब्सक्रिप्शन है वो वैलिड अगर है, अगर नहीं है देन आप खाली रिन्यू कीजिए सॉफ्टवेयर को, आप अपग्रेड करके आप इसको आइए। और टैली प्राइम एडिट लॉग कैपेबिलिटी अगर आप देखें, जैसे अभी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे टैली प्राइम एडिट लॉग करके एक नोट वो है मेंशन्ड है, सो दैट इट मींस ये जो आप EXE यूज कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर ये एडिट लॉग कंप्लाइंट है। एंड एडिट लॉग का पूरा जो चेन है आप इसी हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएटेड है, देन अल्टर्ड है, देन अल्टर्ड है। सो डेट वाइज जो स्टैंपिंग हो रहा है, यूजर वाइज जो स्टैंपिंग हो रहा है, वो सब चीजें जो है एक ऑडिट लॉग का जो चेन है आप उसको देख सकते हैं एडिट लॉग उस रिपोर्ट्स में जाके। एंड पहला वर्जन में क्या था, सेकंड वर्जन में क्या है, आप इसको भी देख सकते हैं। पहले वर्जन में जो जो चीजें चेंज होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, वर्जन 2 में तो कंपैरिजन हो पाएगा। एंड वर्जन 2 में क्या था, वर्जन 3 में क्या था, ये सब जो है कोई लिमिट नहीं है, कितने भी वर्जन हो सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में, एक लेजर मास्टर में। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गिव दैट थिंग्स इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। सो रिपोर्ट भी फिल्टर कर सकते हैं कि क्या आपको देखना है, डिलीटेड वाउचर को देखना है या अल्टर्ड वाउचर को देखना है, सो कैंसिल्ड वाउचर को देखना है, दैट वी हैव आल्सो गिवन। सो डिजिटल सिग्नेचर आल्सो कमिंग इन TP 2.1 जो अभी आने वाला है, जो रिलीज, तो उसमें भी हमने अभी बहुत ज़्यादा डिजिटली जो है इनवॉइसिंग वगैरह भेजा जाता है। एंड रिक्वायरमेंट है अभी। सो dongle based we are what coming up with a dongle based digital signature option. We are just taking another step towards paperless office by adding digital signature to businesses, so that document exchange जो हो रहा है तो उसकी जो authenticity है, उसकी जो टेम्परिंग है अगर हो रहा है, आप जैसे जानते हैं अगर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जाता है तो ये चीजें पता चल जाता है, तो ओरिजिनलिटी क्या था पहले और क्या चेंज हुआ है, दैट कैन बी ट्रैक्ड। तो डिजिटल डोंगल बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि dongle based signature is a type of electronic signature. This signature are created based on the public key infrastructure. Unlike image based signature, this cannot be modified because it has associated public key and the private key pair that will be generated by the vendor called certify authority. जो certify authority हैं जैसे e-मुद्रा हैं और बाकी कंपनीज हैं जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है वो डॉक्यूमेंट में आप प्रिंट करके आप वो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। दिस सर्टिफिकेट आर सिक्योरली स्टोर योर फिजिकल डोंगल दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी. These are generally used in the market as it's provide authenticity and integrated to the certificate. So these three things I have covered. First, e-invoicing कैसे simplify तरीके से आप कर पाएंगे टैली प्राइम में, एडिट लॉग, ऑडिट लॉग की जो पूरा इंटरप्रिटेशन है, जो नोटिफिकेशन है जो लागू होने जा रहा है, दैट आई हैव कवर्ड, एंड डिजिटल सिग्नेचर कवर किया है। आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट मिला होगा। देन आई रिक्वेस्ट की जो हमारे पार्टनर्स हैं, लोकल पार्टनर्स हैं जहाँ पे आप हेल्प लेते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि अगर आपको और कुछ चीज़ें डिटेल में और जानना है और कुछ अपडेट लेना है, सो आपको बस टैली प्राइम में अपग्रेड करके आना है, जितनी जल्दी हो सके आप उसको सॉफ्टवेयर को रेडी कर लीजिए, एंड टैली प्राइम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। या दैट्स इट, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू राकेश। Thank you so much, Ankit, for sharing your valuable inputs on e-invoice, e-way bill, digital signature, and audit trail. So, a couple of questions are on chat box. So, one to one, we can address the queries. First of all, so Subhash Jain ji ka question hai, I want to upgrade my Tally 9 to Tally Prime. Can you help with the same? I am in Kolkata. तो सुभाष जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में एंटर कर दीजिए, वी विल कनेक्ट यू सून। अंकित जी एक सवाल है, वेयर इज द मेंशन दैट सीए नीड्स टू क्लैरिफाई फॉर सॉफ्टवेयर कंप्लायंसेज ऑफ ऑडिट ट्रायल? Yes, we are just going by the notification. So we can share with you the notification. We are not
मेकिंग एनी थिंग्स विच इज नॉट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। सॉफ्टवेयर को भी हम जो अभी तक जो नोटिफिकेशन के अंदर है, दायरे में है, हम उसी को ही डिजाइन कर रहे हैं। सो दैट्स इट सर। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट जो भी क्लैरिफिकेशन है, सो वी आर गोइंग बाय दैट थिंग्स ओनली। थैंक यू। एंड BLWB feedback है, very good initiative for DSC sign in invoice, thanks Tally। थैंक यू सर। आपके फीडबैक्स एंड सजेशंस जैसे जैसे हमें मिल रहे हैं उसी तरह से नए नए फीचर्स एंड प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। क्वेरी है, कैन वी मेक इनवॉइस थ्रू रिमोट यूजर? यस, रिमोट यूजर पे भी, रिमोट यूजर इन द सेंस कि आपने आरडीपी पे दिया होगा या अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे। सो साइमल्टेनियसली सर एवरीबॉडी कैन जनरेट इनवॉइस, उस पर कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर आप लैन पे भी हैं तो तब भी आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में जब रहेंगे तभी कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस अगर दिया हुआ है तो यूजर तभी यूज कर पाएगा और जनरेट कर पाएगा, उसमें कोई हैसल नहीं है। yes. राजेश जी का एक क्वेरी है, व्हेन ई इनवॉइस इज जनरेटेड मैनुअली फॉर सम रीजन वी कैन फेच IR इन टैली बट QR कोड डज नॉट गेट फेच्ड, इज देयर सम वे वी कैन गेट QR कोड इन टैली? तो जैसा कि सर ने क्वेरी किया है कि हम किसी अदर सोर्स से हम ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो IRN नंबर हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट कोई ऐसा वे आउट है जहाँ पे हम QR कोड भी हमारे इनवॉइस पे प्रिंट ले सके? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप शायद आईआरएन को मैनुअली अपडेट कर रहे होंगे, तो आप आईआरएन क्यूआर कोड के तहत अगर आपने सॉफ्टवेयर में टैली प्राइम में अगर आपने उसको अपडेट किया तो दोनों चीजें जो है आपका एक साथ जो आ जाएगा, मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ऑफलाइन से जनरेट कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने जनरेट कर लिया है, उसको अपडेट करना चाहते हैं, बोथ द थिंग्स कैन बी हैंडल्ड इन टैली प्राइम। In case you are not able to do it, just connect to your local vendor, or else you can reach out to our support, they can help you. एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर GSP या ASP रजिस्ट्रेशन फॉर वेयर वी कैन लॉग इन। सो इससे रिलेटेड जो हेल्प वीडियो है सर हम चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर करेंगे और यू कैन इजीली चेक द प्रोसेस। Correct. इनवॉइस मैंडेटरी फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स? अंकित, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई? शशांक जी ने ऑलरेडी कवर किया है मेरे ख्याल से वो चीज को, आई थिंक। एक क्वेरी है अंकित जी का, इन दिस एडिट लॉग फीचर इन टैली प्राइम डज द supervisor गेट द प्रिविलेज टू बाईपास ऑडिट ट्रेल्स? तो ऑडिट ट्रेल के साथ कुछ डेटा हैम्परिंग या फिर ऐसा कुछ पॉसिबल है? सो सर अगर स्ट्रांगली नो। आप अगर ऑडिट ट्रेल का EXE यूज कर रहे हैं और ऑडिट ट्रेल के जो फीचर हैं एनेबल डिसेबल, वो ऑप्शन यूजर के पास नहीं होगा, वो कभी भी उसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे या उसको एनेबल पे जाके कुछ उस पे मतलब अल्टरेशन वगैरह कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग ये यूजर कैन डू। if it is admin, if it is a user, nobody can alter into the these things. Yes. So आकाश जी का एक सवाल है, what should be done if there is mismatch between our tally invoice and the e-invoice portal? So ऐसा रेयर चांस ही होगा सर, जो आपने e-invoice बनाया है वो सेम डेटा GST पोर्टल पे अपडेट होता है तो उसमें वेरिएशन आने के चांस वेरी रेयर है, बट इफ उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो यू कैन इजीली ट्रैक और आप अपने कंसर्न पार्टनर से एक बार चेक कर सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम ऐसे जनरली आता नहीं है सर। जो डेटा हमने ई इनवॉइस बनाते टाइम एंटर किया वही सेम डेटा GSP पोर्टल पे अपडेट होता है। इफ वी हैव टैली ERP लाइसेंस वर्जन सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द चार्ज टू गेट इट टैली प्राइम? सो अगर आप कस्टमर ERP लाइसेंस यूज कर रहा है तो टैली प्राइम पे आने के लिए क्या कुछ एडिशनल कॉस्ट है? सो अंकित आप हाईलाइट करेंगे प्लीज। सर आपका खाली सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट ही लगेगा, इसमें और एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं है। जैसे हमने कहा अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो सिंगल यूजर का जो 20% है वो है, एंड जो अपना टैली अगर मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं
तो मल्टी यूजर का रिन्यूअल कॉस्ट है, इसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं, खाली आपको सब्सक्रिप्शन का जो है वही कॉस्ट है दैट. So I think all the queries are addressed. तो अभी ऐसा कोई ऐसा ओपन क्वेरी नहीं है. So thank you अंकित आई जी. थिंक अगर कुछ एडिशनल कुछ क्वेरी होगा देन यू कैन गेट इनटू योर लोकल वेंडर्स फॉर अपग्रेडिंग योर सॉफ्टवेयर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. So finally, I would like to thanks once again to entire audience participants to join this insightful session. And with this note, we are ending today's session.